when we talk about small and large firms, the first thing we should be able to do is measure the size of a firm. How to do it? So we see that there are mainly four ways through which you can do it. And not just four of these, you have to get a combination of these four. One would be the number of employees. The number of employees a firm has. Usually, the perception is more employees, a large firm, small number of employees, a small firm. But it ignores the fact, what if a business is capital intensive, machinery based? It does not require a lot of labor. तो फिर दूसरा तरीका ये भी आप उसके साथ रख सकते हो, वैल्यू ऑफ सेल्स, कितना सेल का बिजनेस हो रहा है, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी से कितना सेल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वाइज आप कितनी यूनिट्स बेच रहे हो, या सेल्स रेवेन्यू कितना आप कमा रहे हो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कौन सा सुपरमार्केट सबसे बड़ा है, तो आई वुड सी कि कौन कितना सेल कर रहा है, किसका कितना टर्नओवर है. ठीक है, सेल्स स्लैश लेट मी राइट टर्न ओवर. फिर उसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं कि कितना पैसा लगा हुआ है उस बिजनेस में. आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सी कि कितना बड़ा बिजनेस है, कैपिटलाइजेशन. देन वी कैन इवन टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, कितना है उसके पास. मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्या होता है, मतलब उस बिजनेस के पास कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे सर्च इंडस्ट्री में गूगल के पास इंडस्ट्री का बहुत लार्ज परसेंटेज है. ठीक है, तो अगर गूगल के पास मार्केट का बहुत लार्ज परसेंटेज है, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मोनोपोली इन सर्च इंजन, तो फिर कैन आई से इट्स बिगर देन मे बी टोयोटा, होंडा, और इवन लाइक समथिंग लाइक एन ऑयल कंपनी, जैसे सऊदी अरब का यू हैव अरामको और एक्सॉन मोबिल और समथिंग लाइक दिस. द थिंग इज इन टर्म्स ऑफ मनी, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो उसकी है, बल्कि इनफैक्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल. So I would like you to rank and tell me which of these four companies, which one's the largest, which one's the second largest, and so on. So the way I have to make sure is I take all of them into consideration, right? So what I'll do is I'm going to rank them. Total employees के हिसाब से largest is this, second largest, third largest, fourth largest. This is how I'll rank them. Okay? And then capital employed के अंदर this is number 1, this is number 2, number 3, and number 4. That's how in terms of capital employed they are. Total output के point of view से number 1, number 2, number 3, number 4. And फिर global market share के हिसाब से number 1, number 2, number 3, and number 4. So the firm which has the most number of number ones and number twos, I think ExxonMobil is the number one, because it has दो चीज़ों के अंदर it's on number 1, एक चीज़ में it's on number 2, and number 3 एक चीज़ के अंदर. So it has, you know, two of the most in category. फिर उसके बाद it's this one, they have one number 1 over here and 3 number 2s over here. So I would say Toyota is the second largest amongst them. And then it's probably a lot of number 3s with 4s. Glaxo becomes the third and Google becomes the fourth.
So obviously, in this unit, you need to know how you can measure the sizes and then what are the limitations of each of these ways. For example, like I mentioned, अगर आपका main aim है number of employees, then what if the industry is capital intensive? If you say it's in terms of market shares, but what if the market share is humongous and even your percentage becomes a very large percentage? जैसे oil market है, it's a really big industry. And if you even have like 10%, जैसे इसके अंदर आ रहा है Exxon Mobil के पास only has 10%, but turns out, even that 10% is quite significant in terms of monetary compared to other industries, obviously.